So, good evening, all. We are here to discuss on our sanatan dharma, the dietary habits, and of course, Swami Vivekananda. So, we have Diptarko and Debasmita with us. Diptarko is professionally a software engineer, and he is also activist, and he loves to call himself as a son of Swamiji. And Devashmita is our Reiki Grandmaster. So let's start with the uh, today's topic, that is Sanatan Dharma and dietary habits. So I will first want to go to Diptarko. So Diptarko, my question is that how that dietary polarization came into Sanatan Dharma. Thank you, Subhasis, and thank you for calling me to your show. So the topic is it's a very brilliant topic actually. और जैसे कि बात है कि सनातन धर्म में ये पोलराइजेशन कैसे आया, ये विभाजन जो है वो कैसे आया। तो देखिए, पहले एक बात तो मैं बोलना चाहता हूँ कि सनातन धर्म जो है ये अतः ही एक सागर जैसा है, सागर समान है, जिसको हम लोग अपने हिसाब से कागर में डालने की कोशिश करते हैं। वी वांट टू फिट एन एंटायर ओशन probably into the palm of our hands, and that's where a polarization comes in. And Sanatan Dharma has so many scriptures. We actually can claim to be the people of the book, not of the book of, but of the library. Because so many scriptures, so many viewpoints, counter viewpoints. Somebody says something is good, the other philosophy says that is not good. Yeah? So it's been very nicely summed up by Yudhishthira in the Mahabharata when he says there are a lot of conflicting views. So what do you do? It says Mahajano Gatha Sapantaha. So walk the way that the great men of yore has walked. So now that we understand that Sanatana Dharma naturally, and Sanatana Dharma lays a lot of stress on the concept of time and space, desha, kala, etc. So social laws change, food habits change, dietary rules change. So that is what is accounted for. But what is constant as per Sanatana Dharma is the concept of divinity inherent within everything. Okay, so that which the Upanishad says, Isha Vasyam Idam Sarvam. Yeah, everything is pervaded by God. Now, having taken this background, I have diverged a bit, I know, but having taken this background, if we move ahead, then we understand that where this polarization comes from. And it is good because there's a lot of contrasting viewpoints and its adherents. So, अब देखिए ओरिजिनल जो which we today call Sanatan Dharma, जिसका जो past है, somewhere in the dark hoary vestiges of time it is lost, हमें पता नहीं कहाँ से कब आ रहा है। तो उनमें जैसे कि था जो हम देखते हैं बाय एंड लार्ज, इसमें मीट ईटिंग की बात तो है, आपके जो यज्ञ होता था, ये जो होती थी, इसमें तो मीट ईटिंग की बात है, सैक्रिफाइसेस में होती है। और ये भी है कि there's also lot of क्या बोलते हैं, there's also lot of value given to vegetarianism. Right. So ऋषिज ऑफ ओल्ड अंडरस्टूड कि दोनों ही पथ है। वेजिटेरियनिज्म जो है, इट इज अ वेरी गुड थिंग, एंड as a Indian, as a Hindu, I'm proud that India probably is the only country which actively supports and promotes vegetarianism. ठीक है, but having said that, the problem Yes, today, even after the Vajrayan, where Buddhism also went for correct, non-vegetarian food habits, but India correct, still continues. Yeah. correct. So the problem is today that जो लोग ये लेके लड़ रहे हैं on both sides of the spectrum, अधिकतर लोगों को शायद they even haven't had a proper look through even our main scriptures. मान लीजिए जो प्रस्थानत्रयी है, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, या जो भगवत गीता, मनुस्मृति, ये सब जो है। So and based on some हवा हवाई talks, we put our interpretation कि भाई हिंदू धर्म में है तो है, सब वेजिटेरियन होना है। So that is where the polarization has come from. मुझे लगता है it's based on ignorance. So
वहीं पे मेन प्रॉब्लम है. Yeah, yeah, maybe it's true. So, any thought, Devasmita, on this? Yeah, I mean, absolutely. how? I agree with Diptarko that it's nothing but ignorance because you cannot veg and non-veg से भगवान से और spiritualism से कुछ लेना देना नहीं है और नहीं हो सकता है. This is absolutely absurd that if you eat fish, you won't be able to raise your vibrational frequency and get connected to God. And if you are eating vegetables, you can easily raise the vibrational frequency and get connected to God. It's nothing but ignorance, and actually, we have a habit of keeping our opinion in everything, and we have a habit of debate is good. Debate is actually putting our opinion and also listening to others. But the problem with our society is forcing people to accept our own opinion. So the people who eat veg, they by any means want to demean the people who are not eating veg. So that's Yes. there's the problem, and there's the ignorance and nothing else. Yeah, this is the Absolutely problem ignorance actually. and Yeah. yes, yes, Yeah, we have so many paths, right? Like that Vaishnavs do have hatred against Shaivas, or Shaktas have for Shaivas, yeah, Sauras, Ganapathas, all that. But there is a prompt polarization in food habits, that who are taking veg, they are uh, saying that, okay, non-vegetarians are inferior. So this is really creating such problems. Anyway, Tiptarko, I will come to you. That do you think that there is the influence of Buddhism, because they actually started in India that ahimsa paramo dharma. So it started quite back in the time of Mahabharata, or from Buddhist time period? जी शुभाशीष, अगर आप इसको देखते हुए इस तरह से अहिंसा अहिंसा परमो धर्म, ये जो बात है ये शायद महाभारत में आती है, आई मे बी रॉन्ग, Right. युधिष्ठिर बोलते हैं. Yes, yes, इसके that comes बाद from. एक लाइन है जो कि हम दबा देते हैं, हमारे अहिंसा कल्ट में दब जाती है, वही है धर्मे हिंसा तथैव चः. सो यू कैन right. इंटरप्रेट इट इन वॉट एवर वे यू वांट. धर्म के लिए आपको हिंसा करना है तो आपको करनी है. अर्जुन क्या थे? वो क्षत्रिय थे. ये लोग कौन थे? क्षत्रिय थे. वो थोड़े ही ये थे कि ब्राह्मण थे कि बैठे Yeah. रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, होम करेंगे और बोलेंगे भाई कोई आके कुछ भी कर ले, मैं चुपचाप सह लूंगा. बट ये तो हमारी कल्चर नहीं था. अहिंसा परमो धर्म, वाइल वी अंडरस्टूड इट कि अहिंसा सही में परम धर्म है. बट हिंसा, धर्म हिंसा, फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ योर धर्मा, योर रिलीजन, योर कंट्री, यू नीड टू हैव अहिंसा व्हेन नीडेड, राइट. तो इसका जो एक्सटेंशन आती है, अगर आप बुद्धिज्म को देखते हो, बुद्धिज्म एक्चुअली क्या हुआ था, इफ वी टेक द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तब यज्ञ के नाम से, इन द नेम ऑफ यज्ञस, there used to be mindless, merciless killing, cruelty, merciless. जैसे कि अश्वमेध कर रहे, 100 हजार हजार अश्वमेध कर रहे. अश्वमेध क्या था? अश्वमेध यज्ञ, it was the horse used to be sacrificed. तो Yeah. भगवान बुद्ध, he was a compassion personified थे, वो करुणावतार थे, सही बात है. और वो उनको ये चीज उनको चुगी, और वो बोले अपने अनुयायियों को कि अहिंसा चलो, हम अहिंसा रखो, डू नॉट इंडल्ज इन वायलेंस. बट हैविंग सेड दैट, आप अगर देखते हो कि भगवान बुद्ध का जो लास्ट सपर था वो क्या था, जो चंडाल उनको भीख दिए थे, जो लास्ट था वो पॉइजन पर्क था, पिग मीट था. और इनफैक्ट बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, दे कुड एक्सेप्ट मीट एज वेल एज वेज एज वेल एज नॉन वेज, प्रोवाइडेड इनके कुछ नियमावली थे, कुछ शर्तें थी कि यू कैन नॉट सैक्रिफाइस एन एनिमल जस्ट फॉर फीडिंग द मॉन्क. ये इनके कुछ कंडीशंस था. सो बुद्धा हिमसेल्फ नेवर सेड दैट नहीं नहीं ऑल ऑफ यू हैव टू टर्न वेजिटेरियंस. बट यस, ये करते करते क्या, स्पेशली अशोक के समय पे, जब आया सम्राट अशोक के समय, दिस वाज मेड अ वेरी कोर प्रिंसिपल. और इसके साथ जब बुद्धिज्म डिग्रेड होने लगा, लॉट ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस आल्सो क्रिप्ट इनटू आवर फिलोसॉफिकल थॉट्स. और जिस समय वैष्णविज्म आया एज अ रिस्पॉन्स टू दिस करप्टेड बुद्धिज्म,
tab jaake it took some of these founding thoughts of Buddhism as a non-violence and took it to the other extreme. अब देखिए भगवान बुद्ध तो खुद क्षत्रिय थे, भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे, भगवान राम क्षत्रिय थे, तो उन लोग को it's sometimes laughable when people try to portray them as probably not even vegetarians but vegans, but maybe we will discuss it subsequently. But yes, to answer it succinctly, I believe that definitely Buddhism से बहुत सारे ये elements आया. Although there was a parallel thought even in our Hindu philosophy that Brahmanas shouldn't take meat normally except otherwise when offered as a sacrifice. और बाद में Buddhism aggravated it, accentuated it, and this became a core philosophy. Yeah, of and you Vaishnavism. mentioned what in Mahabharata also we have seen that युधिष्ठिर जब यज्ञ कर रहे थे और सारे ब्राह्मणों को बुलाए थे, तो वहां जी पे लिखा था कि वहां पे मीट साफ किया गया था, तो जी शायद वो था हाँ यज्ञ का अंश था वो, that used to be part of the yajna. No yajna was complete without taking out the sacrificial meat. But again, as a एक footnote है, meat it was not as ruthless as it is today. That also is a point. आज जैसे कि yes. industrialization scale पे हो रहा है, Mm-hmm. mindless cruelty, it was not that. For the sake of truth, that also has to be added. That is there. Very Right, much. right. Anything extreme is not good for any society. Yeah. Anything extreme, huh? Correct. Yeah. Correct. But now recently what we are seeing that Buddhists are taking non-veg, but there are extremists like Vaishnavs. Now देखिए यही why? पे पॉइंट है. Huh. सॉरी शुभाशीष, मैं No, आपको no. काटना Please नहीं go ahead. चाहता, Yeah. बट इट्स फनी बिकॉज देखिए बुद्धिज्म जब गया तिब्बत ये सब एरियाज में, व्हाट विल दे हैव पुअर फेलोज, ये इट्स अ प्लेटो, हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, वहां पे एक घास भी ठीक से उगता नहीं है. हाउ कैन दे इवन हैव वेज देयर, है ना? सो इसीलिए काल देश देश काल में हिंदुइज्म वाज ऑलवेज वेरी प्रैग्मेटिक अबाउट. देखिए वो क्षत्रिय के लिए मीट क्यों अलाउड है? बिकॉज दे वर क्षत्रियस, दे हैड टू फाइट, दे नीडेड अ प्रॉपर सोर्स ऑफ प्रोटीन, रजो बढ़ाना था, दे नीडेड समथिंग टू कीप. ब्राह्मण के लिए इट्स नॉट एनकरेज्ड. तो ब्राह्मण बिकॉज भाई वो दे पूजा पाठ करेंगे, स्कॉलरली पीपल है, so they have to keep, their system doesn't need it. So Hindu dharma was never, Sanatana dharma was never compartmentalizing. They foresaw this problem. देखिए same problem हुआ with Buddhism with the introduction of mandatory sannyasa. Right. देख रहे हो, संन्यास सबके लिए, संन्यास दे दो. Hinduism never said that. बोले 4 आश्रम है, सब 4 आश्रम करो, जिसके बहुत ज्यादा वैराग्य है वो संन्यास ले. Yes, that impact we have seen after Ashoka. What happened to Correct. India? Absolutely. The invasion of the Afghan soldiers and all that. Absolutely. Absolutely. अच्छा But एक बात yeah. इसमें Huh. ये भी बोलनी चाहिए कि अशोक के लिए we think ना कि he took up Buddhism after the Kalinga war, Yes. he gave up meat eating. Right. But that is not true. Modern historical records show he had become a Buddhist long before the Kalinga war. And even Okay. after the Kalinga war, there are rock edicts which say that Ashok says that don't promote, he discourages meat eating. He says that in the royal kitchen also we have decreased the use of meat. He's not saying I have stopped it. He's saying पहले इतने इतने जानवर मारते थे तो अभी ये कर रहे हैं. अब समझ रहे? अच्छा ठीक है, non-violent Ashok, he still maintained a huge army towards the Afghan border and all those. Non-violent थे Yes, भाई, yes, yes. गांधी जी All जैसे so बोलते थे. all these are propaganda for a particular community who wants to write Exactly. like this. Yeah. Exactly. Exactly. पर अब तो ये सवाल आ सकता है कि okay, I am agree with you that Rajagun is required for soldiers or Kshatriya, but for Brahmins and for saints, monks, this kind of Rajagun is not required. And this is where the problem came, that everyone thought of Ramakrishna Mission sannyasis as they are monks, they don't need Rajagun. So why don't they need, I mean, why do they need meat? And Swamiji told the younger generation to have that Rajagun and free India. We understood that. But why then Swamiji uh, influenced
his guru brothers, I mean the brother disciples, to have non-veg food. इसको आप कैसे एड्रेस करोगे? जी, ये मेरे लिए सवाल है या देवस्मिता जी के लिए? कोई भी ले सकते हो. Debasmita देवस्मिता जी is नहीं लिए थे. silent for a long. Debasmita? No, I just want to hear what Diptarko has to say about this thing. But I'll come to it later. Let you just put the light on this matter. I come to this later. जी, थैंक यू. अच्छा देखिए, एक बात है कि पहले ना ये हमारे भ्रांत विश्वास है कि जो सन्यासी होते हैं वो सत्व ही सत्व होते हैं, सत्व गुणमय ही होते हैं, जबकि सही बात है, सब त्याग चुके हैं क्योंकि वो ईश्वर अनुसंधान करना चाहते हैं, वो ईश्वर प्राप्ति के लिए. But having said that, some of the greatest rebellions and revolutions in our country has been done by monks. आप जब औरंगजेब काशी विश्वनाथ पे आया था, विश्वनाथ तोड़ने, काशी का मंदिर तोड़ने, तब कौन ये किया था? लड़ा कौन था? घोड़ी लोग लड़े थे. नागा Yes, and सन्यासी we have that Naga sannyasis. Naga, what are The they? They're regiment is warrior there. monks. Yes, They're warrior monks. yes. शंकराचार्य खुद They, बना के गए. right. जब मथुरा वृंदावन में आक्रमण हुआ था, who हाँ, resisted? It was the monks. yes, yes. सन्यासी revolution क्या था in Bengal and other parts of India? Monks. That's a very strong तो point actually. Yeah. है ना, तो Yep. रजोगुण. अब देखिए एक बात है, ये जस्ट टू कम टू दिस पॉइंट, ऐसा नहीं, हाँ, बाय एंड लार्ज monks are purely vegetarian, which is their lifestyle needs it. But देखिए अब अघोरी लोग, ये जो है, many of them तांत्रिक जो सन्यासी है, they make use of meat and all. हाँ, but coming back to the main point is that देखिए अगेन नीड बेस. ठीक है, जहां तक मुझे पता है, मुझे क्षमा कीजिए, हो सकती है मेरी गलती भी हो सकता है, सन्यास का जो एटलीस्ट दशनामी जो संप्रदाय है, उसमें जो सन्यास का जो नियम है, उसमें यही जो एटलीस्ट जो मंत्र है, ये है, इसमें एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं बोलता है कि तुम वेज खाओ, नॉन वेज मत खाओ. हाँ, हर जीव को अभय देने की बात है, हर पशु को, हर जीव, पेड़ पौधा, सबको अभय दान करना. और सन्यासी स्वामी जी से बड़ा अभयदायक कौन थे? और जहां तक ये बात है कि स्वामी जी क्यों बोले थे, आप देखिए स्वामी जी का यही चिंता था, जो which is also proved true to be now to be true, is that कि आप बोल रहे हो मैं सत्वगुणी बनूंगा, जबकि आपके अंदर तमोगुण भरा पड़ा है, कूट कूट के आप में तमोगुण भरा है. You are full of darkness, you are lethargic, you can't walk a few steps, and you are saying मैं सत्वगुणी हूँ. Swami ji used to scoff at that. He used to say the vibrations of light are extreme. The ultraviolet and the infrared both can't be seen. बोलते हैं स्वामी जी. But there are two spectrums of the light. सत्वगुणी एक साइड है, रजोगुणी तमोगुणी एक साइड है. इसीलिए स्वामी जी बार बार बोलते थे, अच्छे से खाओ, build your muscles, be strong, be robust. जब तुम सत्वगुण रजोगुण में पहुंचोगे, when you become very active, जब तुम्हारे अंदर ये लेथर्जी, डलनेस, जो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, जघन्य गुण तामसाहा, जघन्य गुण है, इसको जब तुम अतिक्रम करके रजोगुण आएगा तुम्हारे अंदर, तब इट्स इजियर फॉर यू. जबकि इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि देखो अमेरिकन्स को थ्रू एक्सट्रीम Bhoga, they have come to the stage of Rajo, extreme, and they're fed up with it. Now they're fit to take up a life of Sattva. तो स्वामी जी में ये रुचि थी. और जहां तक ये सवाल है कि why did he make his Guru Bhais non-vegetarians, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ शुभाशीष जी, because he didn't make his Guru Bhais non-vegetarians. स्वामी जी उसका संस्कार को तोड़ना चाहता है, वही पॉइंट था. हाँ, उस पे भी वही मैं एक मतलब पॉइंट बोल रहा हूँ. काशीपुर में जो जाके वो ऑर्डर दिया था होटल में, और श्री रामकृष्ण ने कहा था कि सही किया, नारायण सही किया, वो बस उसका वो क्योंकि श्री रामकृष्ण नहीं चाहते थे उसका कोई भी डिसिपल मतलब खूब स्ट्रिंजेंट हो जाए, मतलब हाँ. क्या था, देखिए वो सिचुएशन इज डिफरेंट. नरेंद्रनाथ कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बंगाली फैमिली, ही यूज्ड टू हैव नॉन वेजिटेरियन फूड ऑल हिज लाइफ. जबकि ये भी बात है दैट एट वन
certain stage of his life, Swamiji had given up non-veg and used to take veg, जबकि उनका साधन Right. अवस्था में वो Yes. लेते थे, right? और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, by the way. और Yes, स्वामी yes. जी क्या थे, ये जो अभेदानंद ये लोग को ले गए थे, बिकॉज आप देखिए किस किस को किन किन को ले गए. अभेदानंद जी गए थे, हाँ, शारदानंद जी गए थे. All of them would let her go to the west and preach Vedanta. yes. And they were non-vegetarians, but because they were at that time Hindu households discouraged usage of chicken curries and all. Chicken, it used to be seen as unclean. Malech, because many times it was the Christians taking it. Malech So, panthi tha ye. so you told another interesting fact that how much insight Swamiji had. That's why he took Yeah, them correct, who correct, he was correct, going correct, to take to America to preach Vedanta. correct, That's Yes, interesting. yes. Interesting. Right. I would just like to interrupt a little bit. This Yes, is yes, what go on. I feel that we are very small to judge Swami Vivekananda's food habits and diet, because they are the Siddha Gurus and they always had a deep insight and they knew what they are doing actually. But we as general human beings, judging them on the basis of what they are eating, it's actually very foolish of all of Yes, very obviously. foolish of because how Obviously. would we कि know काके बाबा बोल रहे what हैं he ना is कि thinking? very stupid. Huh, very stupid. Very stupid, because they can digest even if they are having poison. They have that power. जी जी So जी we जी. being a very normal human being, we are comparing them and telling others that why are they siddhas? Why are they having? Actually, there is no point of discussing all these Debasmita, things. you put off your video, then the voice will come smoother. Okay. Yes, Yeah. yes. So yeah, I am audible now. Yes, better. Yes. So this is very foolish of us. Basically, why would we judge a siddha? He always had something. Just now, Diptarko said, and he always had something in his mind. He used. We can. The siddhas actually can see deep inside everyone, and they had a very deep insight. So we are nobody to judge him on the basis of what they are having, because they have that ability to digest almost everything. Correct. Yes, true. Absolutely. Correct. ये बात ना yes. शायद we will also cover towards the end of the podcast. ये बहुत अहम बात है जो we should also take up towards the end of the And Yes, most definitely. importantly is that uh, every one of us, each one of us has our different food habits. Even in the West, if we go in the West, Jesus Christ are being offered with wine. Okay, so what will you call this? जी नहीं वो देवस्मिता एक बात तो इस पे ये लोग बहुत लोग आजकल जैसे बोल देते अरे ये सब क्या ये सब दे आर नॉट Normal. incarnations and all ये सब नहीं they're normal because ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही आए हैं. That's another level of orthodoxy and bigotry that has come in. तो जीसस क्राइस्ट को तो मानने से ही मना कर देते many novo That Hindus, is so that. to say. Whatever they are telling, actually, whatever their viewpoint is actually proving them to be. They are very. Their values are very. What to say? It's very. What we call in Bengali is Shankirno Manushikota. It's very Narrow-minded. limited. Narrow-minded, yeah. It's very narrow and very limited. Their knowledge is limited. Their what they know is very limited. I don't think meditation, if you actually meditate on your own self, then why would we differentiate between Krishna and Mahadev? Why would we do that? They even create a differentiation between gods. सही बात है. We are fighting over God. We are fighting Yes, over God. And what And Diptarko said in the last thing, Swamiji had replied long back, like you have seen that how we adore Krishna. So incarnations will come to India definitely, and not to your West, where how you served Christ. Correct. right. Correct.
Correct. So anyway, the problem mostly lies with the current Vaishnavs. So Diptarko, my question is, how did they come? I mean, I think that before Krishna also Vaishnavs were there. Vyasdev was there, Shukdev was there. They are also Vaishnavs, right? So long before Krishna. देखिए जो वैष्णव कंसेप्ट आया है ना, हिस्टोरिकली इफ यू थिंक ऑफ इट, द कल्ट दैट केम अप वाज कॉल्ड एज द कल्ट ऑफ भगवतास, वासुदेवास. ठीक Okay. है. आप अगर देखोगे श्री कृष्ण के जन्म के जीवन समय पर, there were some who used to consider him as incarnation, there were many who used to oppose that also. बाद में क्या हुआ, लॉन्ग आफ्टर, जब जैसे कि ये ग्रीक हेरोक्लिस ये लोग जब आए थे, सॉरी हेरोडोटस, मे बी आई एम गेटिंग द नेम रॉन्ग, ये जो ही वाज अ king or something, or sort of a feudatory from the Greeks, and he came to India. He took up the Bhagavata dharma. Okay, he became a Vasudeva dharma, adapted it, and he set up a pillar near somewhere in Madhya Pradesh. Just inscribed hai that I have made this pillar for Krishna. Okay. So this cult, what we know as Vaishnava today, the worship of Vishnu, देखिए वो व्यासदेव शुकदेव ना, they were भागवतास in the sense that they were great devotees of God. व्यासदेव को तो खैर हम विष्णु का अवतार ही मानते हैं, बट आप देखिए पुराण जो है, जो पुराण है 18 पुराण है, उसमें शिव पुराण है, उसका लिपिकार कौन है? व्यासदेव जी है. Vyasdev है. है ना. शुकदेव तो अद्वैत का जो गुरु माना जाता है, उसको शुकदेव. फिर हमारे जो दर्शनामी अद्वैतिक ट्रेडिशन है, उसमें भी जो लीनियज आती है भगवान नारायण से, फिर व्यासदेव आते हैं, तो व्यासदेव को एवरीबॉडी क्लेम्स व्यास एज हिज ओन. सो इट्स ना, लाइक मेरा एवरीबॉडीज क्वेश्चन है कि ग्रैंडफादर. कब से ये शुरू हुआ कि हाँ कृष्णा हाँ एकमात्र एम्प्लॉयर है हाँ, और बाकी सब एम्प्लॉईज है करेक्ट. डेमीगॉड से. So I think this came up more in the Middle Ages. ये जो employer-employee concept, demigod, this god, ये हाँ. demigod concept is very recently, जबकि ये more with the ISKCON movement and Prabhupada having gone to West and trying Right, to right. Okay. westernize So the this whole is a idea, the concept. this is a Prabhupada version of Krishna. Okay. So I might run into trouble for saying that, but that's my understanding. I'm putting a disclaimer. It's my point of view. Okay. बट हाँ, ये जो डेमीगॉड से इट लुक्स मोर, डेमीगॉड कंसेप्ट मोर होता है ग्रीक्स में, एंड दैट्स व्हाई इट्स मोर प्रेवलेंट इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड. इन द पेगन गॉड्स को डेमीगॉड्स ये सब बोला जाता था. तो दैट इज वेयर प्रोबेबली दिस व्यासदेव का कंसेप्ट जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है और शिव पुराण है, उसमें तो शिव को लिंग स्वरूप दिखाया और बोला कि वो ब्रह्मा और विष्णु से भी बड़ा है. तो अरे ये ना पॉइंट तो यही है, जब जो पुराण लिया जाता है, बिकॉज दैट्स द सेम डिविनिटी, आवर सेजेस न्यू इट. बोले ठीक है, मैं डिविनिटी क्या इस नाम का, मानिए आपका नाम है शुभाशीष, मैं बोलता मैं शुभाशीष का गुण गाता हूँ, और आपका और एक नाम है, आप जब ऑफिस जाते हो आप हो शुभाशीष सर, मैं शुभाशीष सर का भी गुण गाता हूँ, तो क्या मैं अलग कोई आदमी का गुण गा रहा हूँ? नहीं, मैं आपका ही स्तव स्तुति कर रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, इज अ ग्रेट पर्सन, such a humble person, so efficient. तो थोड़े ही ऐसे कि आप अलग दो पर्सन. तो इनफैक्ट भागवत में तो ये बात बहुत क्लियरली श्री भगवान बोलते हैं कि जो मेरे में और शिव में ये करते हैं, भेद देखते हैं, वो ज्ञान के पराकाष्ठा पे पहुंच ही नहीं सकता है. वो मेरा वही कि एक ही व्यक्ति. Yes, apart from Bhagavad Gita, there are Bhagavats, there are Udbhav Gita. श्रीमद् भागवत, जी जी जी. Yeah. प्रॉब्लम यही है कि वहां पे बार बार गीता में बार बार वो श्लोक दोहराते हैं ना कि सबको पूजा करोगे तो मेरा पास ही फल आएगा, सब लोग मुझे ही प्रे कर रहे हैं. अब ये मैं मुझे, हाँ, दैट आई मी एंड माई, दैट इज वेरी मच related to a name and a form to them, that is Krishna. They are not going beyond that name and form, and that is where the problem started. Correct. It's like that concept of कि भाई क्या नाम है, आज मैं एक वीडियो सुन रहा था, एक स्वामी जी है, उनका सर्वप्रियानंद जी के साथ उनका वार्तालाप चल रहा था, and they were saying the Gita is the infinite proclaiming itself.
ठीक है। अब जब देखिए अगर ऐसे होता तो बार बार गीता में बोल रहे श्री भगवान उवाच, कृष्ण उवाच नहीं बोल रहे, वासुदेव उवाच नहीं बोल रहे, श्री भगवान उवाच। और श्री कृष्ण गीता के बाद, ये महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन को खुद बोलते हैं, जबकि अर्जुन बोला था अरे आप एक बार दोबारा गीता दोहराओगे मेरे लिए। तो श्री कृष्ण उनको डांटते, बोलते तुम पागल हो क्या, वो क्या ऐसे ही नल खोलोगे आता जाएगा। उस समय मैं एक बहुत बड़ा योग स्थिति में था। So he had identified himself with his real self, जो चिन्मय सत्ता है, जो पर ब्रह्म स्वरूप है। He was in that state, obviously. तो it's no brainer। अभी आप उस पे इंसिस्ट करोगे नहीं नहीं वो तो कृष्ण ही है, जो वासुदेव का पुत्र है, जो राधा के साथ लीला किए थे, तो आप उस पे इंसिस्ट करोगे तो ठीक है भाई। एंड श्री कृष्ण तो हमेशा बोलते हैं कि मैं शर अक्षर के परे परा हूँ। मीन्स ही इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद हिज जो कॉस्मिक सेल्फ है। तो This is very interesting that he connected with his true nature and that Gita came out. जी जी, वो देखिए ये ना प्रॉब्लम है कि अधिकतर लोग जो ये लेके लड़ने आ जाते हैं, एक तो है वो पढ़ाई, जैसे वी डिस्कस्ड एट द बिगिनिंग, पढ़ाई बहुत ही कम है। फिर किसी ने बोला है जो पढ़ा होगा, लेकिन जो who wants to distort it बोला होगा ऐसा है जाओ, and he has heard it। और फिर आजकल तो it's every information is very easily available, distorted या Right. normal proper। अब WhatsApp में कुछ आ जाएगा, भाई श्री कृष्ण ने बोला था जब मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गया था तब ये हुआ था, when श्री कृष्ण was in ऑक्सफोर्ड, उस तरह का वीडियोस you know what I mean आते ही रहता है। So yeah, पर ये जो अधिकारी है, ये अधिकारी भी डिफाइंड नहीं है ना शास्त्र में। लाइक ऐसे देखेंगे तो युधिष्ठिर वो he was more inclined towards religion, dharma, but did Krishna choose him? No. Arjun was chosen. Correct. So he is representing there as the person who actually is in need of the Gita। देखिए युधिष्ठिर के साथ ये था ना, स्वत्व गुणमयी थे और ही वाज ज्ञानी तो थे ही, वो परम ज्ञानी थे। और इसलिए शायद उनको बोला नहीं कि उनका वो जरूरत नहीं था। भीम को नहीं बोले कि भाई ये तो इतना ही लड़ूंगा मारूंगा खाऊंगा। he may have thought probably लगा ठीक है, is not, ये अर्जुन probably is the fit person, इसलिए उनको गीता बोले। but luckily for us Arjuna is our representative। अब देखिए अर्जुन को सब कुछ बोल के ये भी बोलते यथेच्छसि तथा कुरु, नहीं बोलते भाई मैं जो बोला ये कर, बोलते यथेच्छसि तथा कुरु, है ना। और sorry to interrupt, I feel that this scripture Gita you will understand according to your level of consciousness। सही बात है, true the level in I will understand Gita as per my level of consciousness, you will understand in a different way। So that's the main thing here। So whatever we are doing right now is कृष्ण जी ने ये बोला था गीता में ये है, these are all tempered and nothing else। Yes, the shastras have been tempered at a very great level। आपको मैं एक मजेदार बात बोलता हूँ, हंसी की बात बोलता हूँ। So few days back with all these controversies going on, एक सन्यासी है स्वामी समर्पणानंद जी बोल के, रामकृष्ण मिशन के very learned sadhu, he had put up a video taking instances from shastras where meat eating is also supported। ठीक है, तो somebody, एक लड़का ने लिखा, उपनिषद में लिखा है कि प्लांट्स का तो लाइफ है लेकिन वो फील नहीं करता है। So then somebody put a comment saying, okay, you quote it, which shloka and which Upanishad? लड़का चुप। क्या ऐसा है ये जैसे क्या ये करते हैं ये लोग जो प्रवचन देते हैं बहुत लोग। इनफैक्ट द पर्सन was stirred up this controversy, उनका ही बहुत सारे वीडियोस है जिसमें he has quoted something very randomly, है ना। तो बेसिक चीज जो है ना वो we are missing the basic thing। स्पिरिचुअलिज्म का तो एक बेसिक है ना, वो ही हम लोग मिस करते, because these things are very easy। eating veg is much more easy than sitting for a meditation and doing meditation
going deep inside our own self, these things are very difficult. Rather than it's easy to have veg and uh, these are very easy to adapt. I Correct. feel that's why people are जिसका after जिसका all पास these things. कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी वो सब वगैरह वगैरह चीज कम है, तो उन लोगों के पास तो क्या खाता है क्या पढ़ता है वही Belly सब होगा। consciousness. हाँ, Belly consciousness. डेली कॉन्शियसनेस, तो जिसका मन, आई मीन द लास्ट थ्री चक्रास। Belly consciousness. So Devasmita, you very well said that the level of consciousness के ऊपर depend करता है कि how we perceive Gita. So low, in the lower level of consciousness we have Gita as it is, and after that maybe uh, Nimbakacharyas, then Ramanujams, then Shankaracharyas. So Right. this kind of journey, I mean, from the lower level of truth to the higher one. So Diptarko, once again back to you. That do you have any evidence of that Sri Rama had taken meat sometimes in his life in Ramayana? देखिए, the whole point is that they were Kshatriyas. So Yes. they used to take meat, they used to perform yajnas, they used to hunt. अब ये हम बोलेंगे नहीं भाई ये लोग तो शुद्ध शाकाहारी थे, तो that's intellectual dishonesty. In fact, the original verses are very much there. What you can do is you can text torture the shlokas to bring some very different जो हम बंगाली में बोलते हैं बिदघुटे, means very Odd, distorted extremely or odd. extremely distorted meaning out of it. But yeah, instances तो बहुत है. Just to quote a few, जब भगवान राम, when he killed Wali, so Wali was reasoning with him, why did you kill me like a coward? I had heard so much of you, आप तो महान है. Then he said कि he gave the reasoning of dharma point कि तुमने तुम्हारे भाई को भगा दिया, तुम अधर्म में लिप्त हो, भाई की जो पत्नी है उसको संभोग कर रहे हो. And interestingly, he also says after all this one more thing, कि hunting is a sport which is carried out by Kshatriyas, even by the Rajashis. Is the Rajashis, Right, the great right. ones who are highly spiritually evolved. Yes. For them also it's a sport. We sport with animals whom we are allowed to kill. Hmm. Okay, so from that point of view also it's justified. Then आप एक बात बताइए, जो मैं अगेन वही पॉइंट दोहराता हूँ, भगवान राम के जन्म के समय अश्वमेध यज्ञ हुआ था. अश्वमेध, भगवान राम खुद अश्वमेध यज्ञ किए थे. अश्वमेध यज्ञ क्या है? A horse used to roam, come back. If it's And stopped by then somebody, you fight, and then sacrifice. after the Sacrifice by sacrifice, whom? yeah. So The Kaushalya, king, Mata the king Kaushalya himself. sacrifice. The king or the queen Yes, used to sacrifice yes, it, yeah. and then the meat along with the other animals. So how can you This say was no? actually They a were ritual there. ritual Yes, there, right? Brahmanas and also Sita used to eat from that ritual. and Mata Sita Sita Mata says, correct, promised to Ma Ganga absolutely, to Gaganga offer the wines and was all wine and meat. Yeah. meat. So it was common in their culture, wine, meat. But having said that, what do you look at it? Bhagwan, that's what Kathia Babaji has said, revered Kathia Baba Maharaj has said something very important. He has said, Rama killed 14,000 Rakshasas in one day. Rakshas. Can you do it? Correct. I will also add one more point here with my little knowledge. Rama stayed with his young wife, whose beauty was famed throughout the three worlds, for 14 long years as a celibate. Oh, Can you do strong it? point. Very Strong strong point. point. Vegetable खा के भी तुम कर पाओगे? The राम instance, the जब difference between cat and Exactly. the lion, Sri Ramakrishna correct, cat and the lion. cited. वो Ram could at a glance he could cast away, renounce the kingdom and never look back. He didn't care for it. Can you do it? तुमसे तो तुम्हारे शायद पुरानी फटी हुई जीन्स भी छोड़ी नहीं जाएगी. Can you do it? Can we do it? We can't do it. Look at him. But, कम but, उनको but हम लोग बोलते पर जितना भी करुणावतार. सेलिब्रेसी किया, जितना भी सेक्रीफाइस किया, सिद्ध हाँ, पुरुष वो है नहीं, क्योंकि हो नहीं करुणा ही सकते. तो नहीं दिव्य है. दिव्य राक्षस पुरुष नहीं है. राक्षस मार दिव्य लिया, मांस खा दिव्य लिया, पुरुष है सिद्ध नहीं. पुरुष दिव्य नहीं. पुरुष है नहीं. वही हो गया. कुछ भी कर लो तुम. दिव्य You पुरुष have तुम to हो have नहीं veg. सकते. Yes, Only yes. one thing you Only need veg. to only one thing you need to have is you have to have veg. Correct. Then only you can become a siddha. Then just imagine how many siddha purush we'll have in this whole world. Yes. Everyone having veg is a siddha purush. Yeah, in the form of 2 legs, 4 legs, all that. हाँ. Yes, Yeah, सही बात. absolutely.
सही बात। अच्छा, भगवान हाँ, कृष्ण वो की लोग जब तो बात आती है, वेजिटेरियन है। हाँ जब भगवान कृष्ण की बात आती है, देखिए एक बात बताइए, जो लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण वेजिटेरियन थे, ये जो खांडव दहन हुआ था महाभारत में, वो क्या था? सो यू बर्न्ट एन एंटायर फॉरेस्ट, जितने भी जंतु जानवर उसमें थे, दे वर बर्न्ट, एक्सह्यूम्ड। क्यों नहीं? अग्नि को 12 साल से वो भूखा था, उसको घी दिया गया था। सो एंड यू से ओके ओके, सो इट्स जस्टिफाइड। हाउ कैन इट बी जस्टिफाइड इन दैट केस, अगर इफ यू गो बाय दैट लॉजिक? तो सो इज दिस प्राइम एग्जांपल ऑफ वेजिटेरियनिज्म? आप ही बताओ। दिस इज अ पार्ट ऑफ सैक्रिफाइस। सीधी सी बात है, वेजिटेरियनिज्म कहाँ है? एन एंटायर फॉरेस्ट वाज बर्न्ड and And all animals, not even one single animal was left. yes, and it was shared last day that Kalos me Carlos, lokokshet. हाँ, So how Carlos में does हाँ, it he says now I'm death. ठीक है, चलो आप वो बोल सकते हो थियोलॉजी लगा के, नहीं वो तो भी भगवान है, काल है, तो वो सब छोड़ो, वो चलो थियोलॉजी के पॉइंट, बट दिस इज फ्रॉम अ नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू। बाद में जब पांडव लोग जंगल में थे, तो ये युधिष्ठिर को एक बार ऐसे आया, सपना आया कि वो हिरन जो है इस जंगल में, वो आके बोल रहे, विनती कर रहे, आप लोग ये जगह छोड़ के चले जाओ। क्यों चले जाओ? नहीं, आप लोग इतने ज्यादा हंटिंग कर रहे हो कि हमारी जो ये है, जो ब्रीड है, वो खत्म होने आया। सो देन युधिष्ठिर इन द मॉर्निंग कॉल्ड हिज ब्रदर्स एंड सेड कि चलो यहाँ से चलो। सो ये क्या है? So lots of citations are there. Yeah. So Lots of so final citations. question to फिगर Diptarko. कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाके रुकेगा? सही Then you will have to सही सही stop बात। worshipping Buddha. He took meat. तो बुद्ध भी Yes, सिद्ध पुरुष, दिव्य पुरुष है ही नहीं। नहीं है हाँ, ही नहीं। कृष्ण नहीं है, राम नहीं है। अच्छा, परशुराम जी को मानोगे कि नहीं? आई डोंट नो। ब्राह्मण तो थे, लेकिन 21 बार क्षत्रिय शून्य किए थे। If that counts, human killing humans as violence counts, तब पता नहीं वो भी ये हो जाएंगे। भगवान नरसिम्हा, वो तो ये छीन के निकाल के, ठीक है, बोलोगे राक्षस का है, बट उसको भी तो दर्द होता था इन दैट केस। ठीक है, चलो जो भी सही आप सही बात है, थियोलॉजिस्ट पे लगा सही भी बात सकते। और कौन रहा आप बोलिए फिर? किसको पूजा करेंगे? भगवान बलराम को करेंगे, वो तो वारू नहीं पीते थे, है। हाँ, दारू तब तो उनको वो पूरा। भी, हाँ, वारू नहीं पीते थे अच्छा, देन वो भी लिस्ट से निकल जाते हैं। नित्यानंद प्रभु यूज्ड टू टेक वाइन्स। अच्छा, दिस आई डोंट नो, मे बी यू हैव नो दिस बेटर, मे बी। हाँ, तो जब वो भी लिस्ट से गए, तो कौन रहा कौन? टॉम डिक हैरी जो वेज खाते, बस वही पूजनीय है हमारे, वही करुणा अवतार है। अच्छा Diptarko, one final question, that is finally, what is your personal opinion that do non-veg food have a direct impact on spiritual life? I think I will request Debasmita ji to start because she is a grandmaster और उनका Yeah. कनेक्ट इस पे बहुत ज्यादा है। फिर I will put in my, and I would also like to listen Subhasis ji to your opinion। देवस्मिता जी के बाद आपका भी ओपिनियन मैं सुनना चाहूंगा जी। Non-veg, thank you, Diptarko and Shivaji. Non-veg food, actually, my opinion is, I have mentioned this earlier also, that the time taken to digest digest meat, fish is much more than digesting vegetables and something like that. So why it is said that you should always take सात्विक भोजन करना चाहिए, सब ये बोलते हैं ना। तो Right. सात्विक भोजन जो होता है वो क्या होता है, ये हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो जो भी कोई चीज आप, जब वी आर, जो फल जो हम तोड़ते हैं, जब भी हम तोड़ते हैं उसी क्षण उसका प्राण चला जाता है, ठीक है। सो वी आर हैविंग सात्विक भोजन, मतलब यू आर, पीपल जनरली मेंशन मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स which are easy to digest, and if we have that, then what happens is that our body doesn't take much time to digest all those things, and we can concentrate more on our meditation. That's why it is said that you should have veg food. But as I said that food actually is a habit. Okay, now I have a habit of having fish from the very beginning.
of my life. And I am in a profession where I practice Reiki, I teach Reiki, and I have to do a lot of meditation. But still, I cannot get over the fact that I every day I have fish. So, taking the example of Reiki, it is said that 3 days before taking the attunement of Reiki, you have to have veg food. Why? So that your toxins get released easily. Not only veg food, but also you do not have to. You cannot have. If you are smoking, you cannot do that. If you are drinking, you cannot do that. But one thing, the main important thing which is missed out is those 3 days you have to lead a very pious life. What is pious life? Pious life is your thought process should be very pure. You should think positively, you should behave with people positively, you should have karuna inside you, you should not be judgmental. Why? Because if we are doing all these things, then our vibrational frequency will go down. And when we are going to learn something which is so very connected with the universal life force energy, we won't be able to take the attunement properly. Now, it's very easy to have food, veg food for 3 days, but is it very easy to think positively and not judging people, not behaving in a way which harms my own self as well as others? So the point is that having veg food is not the only thing which can raise our vibrational frequency. What is Yeah, the main motive behind all these things? Veg, non-veg, इसका main motive क्या है? So that we get connected to the God which is inside us. ये जो कृष्णा भगवान, जो महादेव, जो भी हम लोग बोलते हैं, ये बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है. तो ये इसको समझने में it will be very easier for us to understand if we go deep inside us. And for that, if we have sattvic food, the digestion process will be very easy, and we can, our body energy, we can invest our energy in connecting to that God which is inside us. Now, having veg food is not enough. That's just a very little part of understanding the God inside us. The main thing which is important is how you are you living your life. How is your thought process? What is your thought process? Now, I yes, have a habit of eating fish every day, and if I am asked that you don't eat fish, and ये ईश्वर को हम लोग मानते हैं प्यार से, हम लोग डरते हैं इसलिए ईश्वर को मानते हैं ज्यादातर लोग. अगर if I say to anybody that God will punish you, don't have this, we are afraid of that and we start doing that. So if somebody asks me that why do you eat fish, you should not. So my only question to them is that even if I don't eat fish, but every day I urge, मेरा अंदर का जो urge है वो fish के लिए तड़पता है. I want fish every day, but I cannot have fish just because somebody has told me. Then will my toxins be not released? This is my only question. Correct. So unless and until you are very comfortable with all these things, because when you raise your vibration, when your vibration will be raised, food will be the least requirement, and you automatically will leave all these things. yes, Eat as you said, something which is as you very say funny. that sacrifice comes within. I mean, it should come automatically, not forcefully from external side. I will just add one point that what Swamiji said, that the goal is to manifest the divinity within. Do whatever and be Yeah, free. And he that's said why what he that based on right. yeah, and what he said, that doctrines and dogmas and forms and temples are but secondary details. So, so this food is also secondary details, not the primary. Primary is to manifest the Exactly, divinity within. exactly, And what exactly. Food I is mean, Guru secondary. only knows which food is appropriate for which disciple. अगर मेरा गुरु मुझे कहा है कि मांस मत खाओ, तो मुझे वही फॉलो करना चाहिए. अब स्वामी जी के लिए क्या श्री रामकृष्ण ने कहा था कि बेश করেছিস,
ও তুই যদি হবিষ্যান্ন খাস রোজ, তাহলেও তুই নরেন হতে পারবি না, আর নরেন গোমাংস খেয়ে এলেও নরেনই থাকবে। সো ইফ সামওয়ান keeps his mind in God and he takes non-vegetarian food, that is allowed. I mean, his mind is connected with God. That is more important, I think. Ji, I just want to add a few points here quickly. I loved both of your viewpoints, very insightful. Especially to add on to what you said, Shubhashish ji, that the people basically don't try to understand this. Who was Vivekananda? ओके आप अगर मानो आज सूर्य के अंदर जाके अग्नि को मांस मच्छी देते हो यज्ञ में जैसे करता था, और आप बोलते अरे अग्नि तो अपवित्र हो गया, इंफीरियर हो गया, ये बेवकूफी है। तो विवेकानंद इज दैट फायर, दैट सन, कुछ भी खाते थे और हजम कर जाएंगे, एंड येट ही कैन meditate whole night, he can go into nirvikalpa samadhi as easily as we go to our dining table, right? आप कर पाओगे? Vivekanand Right, is right. so attuned. Ramakrishna is भगवान श्री रामकृष्ण is so attuned. वो ऐसे ऐसे थोड़ा से गाना हुआ, ये हुआ, बात हुई, भगवान श्री रामकृष्ण goes into samadhi, and in that stage they see oneness with entire creation. वो देखते हैं कि घास के ऊपर कोई चल रहा है, तो श्री रामकृष्ण बोलते, ठाकुर बोलते थे, अरे दर्द लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, उसको रोको, उसको रोको। स्वामी जी That- कहीं फिजी के पास कोई earthquake हुआ था, that day times there was no newspapers, nothing. That very moment when that earthquake was happening and lots of people were getting killed, Swamiji woke up and started pacing here in Belur Math, Kolkata, and his Guru Bhai Swami Vijnanand asked him, what happened, Swamiji? He says, I don't know, something's wrong somewhere. सच इज देयर कनेक्ट। अरे आप क्या जज कर रहे हो? हिंसा, आप हमें हिंसा भरी पड़ी है। वी आर एन हिंसा होती है जब देखता हूँ किसी की तरक्की हो रही है। वी आर एनवियस व्हेन वी सी समबडी गेटिंग गोइंग अप इन लाइफ देन अस। वी आर किलिंग अदर्स बाय थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, एवरी मोमेंट हमारे अंदर हिंसा भरी पड़ी हुई है। When we say अरे इसको मारो, ये क्यों नहीं, इसकी क्यों खराब नहीं आ रहा है जिंदगी में कुछ, ये क्यों बढ़ते जा रहा है, that is himsa. When we ride the moral high horse and say अरे oh all you lowly people eating veg, non-veg, तुम डूब मरो, we are doing हिंसा। तो हिंसा हमारे अंदर भरी पड़ी है। So ये बकवास है। Only after a man has samadhi उनसे हिंसा चली जाती है, not before that. And Swamiji, Shri Ramakrishna, तो they were दिव्य पुरुष क्या थे, अवतार पुरुष तो थे ही श्री रामकृष्ण, ये तो। बट हैविंग सेड दैट, यस, स्वामी जी आल्सो राजयोग में ये बोलते हैं जो साधक होंगे उनके लिए वेज फूड इज ऑलवेज प्रेफरेबल। सही बात है, सत्वगुण आपको चाहिए, बट ये भी बोलते हैं, पीपल विल से अरे स्वामी जी तो खुद बोले, बट स्वामी जी ये भी बोले फॉर द टॉयलिंग मासेस दे नीड टू हैव रजो। देखो what has this cult of vegetarianism done? It has made you tamasic. You can't fight back. People are enslaving you. क्या तुम में यह है, सत्व की क्या लेश मात्र नहीं है? तो इसीलिए he used to insist. But Swamiji also says this in his lectures. Why should you give up meat? Why should you give up non-veg food? Make it so hot for nature that nature will compel you to give it up. And that is true. It's verifiable. अब जितने साधन में आगे जाओगे, जैसे देवस्मिता जी बोल रही थी, जो जितने सत्वगुण आप में बढ़ता जाएगा, you will generally develop a disdain for non-veg food. Definitely not disdain, but it's आपसे ये it will fall off. Disdain is a very small bigoted word. So will the desire for eating all this मसालेदार, भाई पनीर लबाबदार, बैगन भरता, ये फलाना टिमका, जो बोलता है हम शुद्ध आहार, क्या शाकाहारी है, और ये जो भरे भरे लहसुन प्याज से मसाला देके एकदम जीवा की संतुष्टि के। सो साधक का वो, जैसे श्री भगवान गीता में वही बोलते हैं, प्रजाहाति यदि कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मन तुष्टः, आत्मैव आत्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य उच्यते। So the person from whom all desires have fallen off. तो जितने आप साधन में आगे जाओगे, आपसे जितने डिजायर्स फॉल होती जाएगी, आप जब आत्मैन व आत्मन तुष्ट, जब अंदर जो आत्मन बैठे हुए हैं, द ग्लोरियस आत्मन, who is the same in all,
जब उसको उनको देखते रहते हो आप, ये सब छोटी छोटी डिजायर्स चली जाती है। श्री रामकृष्ण उसको बहुत सुंदर से बोलते हैं, सुंदर तरीके से बोलते हैं कि तू क्या सोचता है, मांस मच्छी छोड़ देना, पान छोड़ देना, ये सब छोड़ देना ही धर्म है? नहीं रे, त्याग है। वासना त्यागना असली धर्म है, असली आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इज दैट। सैडली वी आर मिस्टेकिंग द ट्रीज फॉर द वुड्स। अब क्या बोले, अब है भी तो लोग है यस नाइस बोलने वाले लोग है। आपने जाके भाषण दिया नाइस करके, एक बार दो डिस्को ऑन कर देगा, बस हो गया। क्या है, हाथ जितने भी ताली भी लोग मिलेगा। हैं It ताली is- में है, लोग है तो ऐसे जड़बुद्धि लोग से भरे पड़े हैं, तमोगुणी तो है ही। तो यही था पॉइंट। Lack of हाँ, awareness is the main reason behind all these things, ब्रेन and वॉश्ड, हाँ, ignorance. Basically, as you इग्नोरेंस। said, Diptarko ji, that ignorance is the main thing, and of course, brainwashed. Why I won't be brainwashed by anybody? Because why? Because I am very आई strongly connected with my करेक्ट roots. So that is करेक्ट the main important thing. You should know, understand your roots. You should understand what Sanatan Dharma is all about. And why जी this happens, to me, it's only because we have a habit of conditioning our mind, and even God is not spared in that. गॉड तेरे को इज नॉट ये दे स्प्रेड दो, नॉट ये दे दो, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। अगर ये नहीं दिया तो दूसरे एक भगवान के पास हम हाँ। चलो चलते हैं दूसरे एक। कृष्ण से नहीं हरि हो रहा है, चलो महादेव के पास जाते हैं। महादेव हरि से नहीं हो रहा है, चलो माँ दुर्गा के पास चलते हैं। कृष्ण हरि किसी से नहीं हो रहा तो हालेलुया के पास चलो, तो वो भी है। चलो हालेलुया के पास ना, तुरंत कुछ 5-10 मिनट में कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जी हम लोग भूल चुके हैं कि क्या, what connects us with this supreme energy, and that is nothing but love. देवस्मिता When you देवस्मिता fall जी in ने ये love, बहुत सुंदर एक बात किया। यू रिमाइंडेड मी ऑफ स्वामीजी's वन थिंग दैट তোদের ভগবান কি এতটুকুনি নাকি যে এক টুকরো মাংসতে দয়ার নিধিতে पांच চড়া के, পড়ে हाँ, যাবে? it will dam up the God's love, as he is so small that it will dam up God's love with a piece of fish। स्वामी जी Yes. बोलते right? हैं, बात सही बात है। So we are missing the basic thing, that we have to have that love, that compassion, करेक्ट that karuna करेक्ट। for everyone, and love for God. If you are when you are in totally deeply in love with your God, then nothing else will matter. सही बात है, सही। तो कंक्लूजन आई एम कंक्लूडिंग दैट एक चीज है जो गलत है उसको समझना, व्हाट इज गोइंग ऑन ट्रेंडिंग ऑल दैट थिंग, जो गलत है उसको समझना, पर इन पैरेलल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट। क्योंकि सही बात। राइट का पार्ट में वो भी पड़ता है कि चलो नॉनवेज इतना भी मत खाओ ताकि वो तुम्हारा रजोगुण इतना बढ़ा जाए कि सत्वगुण से बहुत दूर चले जाओ। मतलब ये महापुरुष का वाणी पूरा को जैसे समझना भी जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसका जैसे जो रुचि है वो खाओ, रुचि हम्म, नहीं है तो मत खाओ, लेकिन डोंट पुट। द प्रॉब्लम इज आल्सो ऑन द अदर स्पेक्ट्रम। जो नॉनवेज लोग, ये जो नॉनवेज खाते हैं उनमें से कोई कोई बोलता है अरे घास फूस खाने, दैट्स अ डेरोगेटरी टर्म, क्यों यूज यस करते हो? यस यस, जिसको जो करना है, आर यू लीडिंग अ प्योर लाइफ, होली लाइफ, अ लाइफ ऑफ लव, कंपैशन, सर्विस, राइट, दैट्स ऑल। दैट्स द ओनली पैरामीटर वी शुड अकाउंट जी फॉर। जी एनीवे, वही सही बात को मतलब स्प्रेड करने के लिए हमारा ये प्रयास। आप लोग साथ में रहिए। थैंक यू दीप्तक जी, थैंक यू देवस्मिता थैंक जी। यू सुभाषिश हैव अ जी। नाइस Thank डे। you, Subhasis and Diptarko. जय श्री भारत माता की रामकृष्ण, जय जय, मां जय शारदा, श्री जय राम। स्वामी जी, जय जय। भारत माता की जय। भारत जय माता की जय।